Hello students. Yes. Hello students. A very good morning to you all. Good afternoon actually it is. Our class was rescheduled at 1 p.m. because of some student and some registration form work related issue. So I have shifted my class from 9 a.m. to 1 p.m. So now also watching means number of users are less, 17 users, almost 104. Time is 3-4 minutes. Actually this time and I told you that today is the class with the introduction of uh, Python language. So I told you in my previous class that we will start Python language, and after that also I am having very less number of students. Why it is? Timing is actually this time is not okay. No problem beta, you have already 10 to 15 minutes gap between each and every class, so you should attend. Okay, before starting the new concept, new title, that is Python, Python. Okay, so some those who don't know about this, they are having really a scary word. It is Python. Oh my God! It's a kind of what kind of this thing? Certain questions are in your mind and maybe in the mind of the students or those who heard this name first time. But Python is a language, it is a programming language. I will discuss these things about what is Python, what we will do, what we can do. Before that, one doubt I got from one student that they have a problem in some negative number impression, negative number representation. You may be having some doubt. So let me clear that doubt first, and after that I will begin the Python. So suppose you want to write a number 11, okay? So you 11 you convert into binary. 11 is 1011. If you convert this 11 number into binary, then this is the number format, exact number format. But we are not having 4-digit pattern. Either we should write 6-digit pattern or 7-digit pattern or 8-digit pattern. So if we write this in 6-digit pattern, even if we want a number of 6-digit, then we have to take a higher range of number, and the leftmost bit, that is called MSB. This we will reserve for sign representation. If a number is negative, then MSB is 1. If the number is positive, then MSB is 0. See, this is the negative number representation. Very simple it is. The MSB should be 1 for negative numbers and it should be 0 for positive numbers. So this 11 is a positive number, so this MSB should be 0. And if we want to write 11, then same number we will write as it is, but the MSB should be 1. MSB should be 1. This is called sign and magnitude form of negative number representation. So this is first method called sign and magnitude form. Alright. There is another format I told you, that is Vaughan's complement form. Let me clear this also. Let me clear this method with this slide. You can go through this. Representation of negative numbers, right? That already I explained. Maybe during
explanation of this slide, your video may be at that time video was something blurred, so you couldn't get it. So now you can note down it very easily, very clearly. Negative number representation, binary is already having two symbols 0 and 1, so we could not give plus or minus symbol, right? This is the first point. So we represent negative numbers by using, instead of giving minus or plus symbol, in computer we give these numbers distinguishable with the help of an extra bit, or it is also called a flag bit. It is also known as a flag bit or called sign bit or sign flag in the binary number representation. Suppose we are having 8-bit number, the number itself is having 8 bits and the number is negative. The machine is also taking only 8 bits, then this extra bit, 9th bit, we have to add for sign. This is the drawback of all this number also. We have to give a negative number representation, 1 bit extra we have to give, right? So sign magnitude method is, you can see that we will add an extra bit, 1 for negative and 0 for positive. See this example also you can see. The plus 6 number in 5-digit number 0 0 1 1 0 is the plus 6. We will add one extra bit, that is sign bit. Okay, for minus case this should be 1. In 1's complement method, you can have a look of that. In 1's complement method, as I already told you, 1's complement method converts all the 1's to 0 and all the 0's to 1. What is the size of an empty folder? In 1's complement method, the MSB, same format, MSB should be 0 for positive and 1 for the negatives, and we will do the complement of all the numbers. See, plus 6 in form of 5-digit numbers. See, plus 6, if we go with this, look at that, 0 0 1 1 0, this is plus 6. Okay, then it's same like as it is written here, but when we do negative number representation, minus 6, we will convert it 0 0 1 1 0, we will convert it into 1 1 0 0 1 1. Why it is 1 1 0 0 1 1? All the ones are converted to 0 and all the zeros are converted into ones. So in the same way, if we need not to give any additional bit. The first bit itself represents the sign, so we should not add the additional bit in 1's complement method. Right here you see, same example, you just compare. This one is the plus 6, okay, 0 0 1 1 0. But here in negative sign and magnitude complement form, we have to add one extra sign bit, that is the MSB. Okay, in 1's complement, automatically the MSB will convert. So same, we should not add any extra bit for sign. Okay, minus 6. If it is not okay, you can tell me. I will explain. And in the second method, that is 2's complement method, in the same way you can get the 2's complement. First you have to know how to get the 2's complement of a binary number, that you must know.
सी टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं बेटा, ध्यान रखना, मेरा जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, राइट से लेफ्ट चलो टिल फर्स्ट वन, जब तक पहला वन नहीं आ जाता है सेम सारे डिजिट्स को कॉपी करो। जैसे ही पहला वन आ जाता है उसके बाद आप आगे के सारे बिट्स को उल्टा कर दो, कन्वर्ट कर दो, वन को जीरो, जीरो को वन। ये तो है स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, ठीक है। ठीक है, अब जैसे ये देखो -6 था तो जीरो एज इट इज आ गया, पहला वन राइट साइड से ये सेकंड वन आ गया, उसके बाद सारे नंबर को उल्टा कर दो, अगला डिजिट है वन तो उसको जीरो, फिर जीरो है तो उसको वन, फिर जीरो है उसको वन, ठीक है। तो ये तो हमारा मेथड था, जिसको मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं हम हमारे मेथड पे वापस। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको नंबर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो एक बच्चे ने और पूछा था कि पॉइंट वाला डिवीजन एक बार फिर से बता दो। तो बच्चा डिवीजन में तो सेम वैसे ही करना है जैसे आपको नॉर्मल नंबर को आप डिवाइड करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही करना है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जहां पर बीच में पॉइंट आता है वो एज इट इज ऊपर चला जाता है जैसे पॉइंट आएगा, ठीक है ना। और जहां पर डिवीजन ब्रेक होता है वहां पर आप जीरो लगा सकते हो, बाकी वन और जीरो दो ही बिट आएंगी, ठीक है ना, और कोई बिट आएगी नहीं, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करो, अगर आपसे डिवीजन नहीं होता है या मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है या कोई भी नंबर सिस्टम कन्वर्ट नहीं होता है, आप आराम से पूछना। अब अगर फिर भी कोई दिक्कत आई आप व्हाट्सएप पे डालिए, हम लोग एक मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे और फिर हम इसको देख लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम कमिंग एग्ज़ाम की। कमिंग एग्ज़ाम, पहली बात तो ये कि अभी आपका जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आपने फाइल सबमिट नहीं किया असाइनमेंट। सो लेट मी चेक इन कंप्यूटर साइंस how many of you have submitted the assignment, and the number actually 19, I think it is something very less. It is the first assignment, so you should take any advanced step and complete it. So 41 students have submitted the assignment, and that means almost 7, 9 and 3, 12 students have not submitted. सो बेटा ये लेट, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 6 बच्चों ने लेट सबमिट किया है, मीन्स कल ही सबमिट किया होगा, कोई बात नहीं। तो अभी आपको दो चीज़ें बस ध्यान से सुननी है। एक, असाइनमेंट मैंने पूरा महीना आपको पढ़ाया, मैंने कोई भी असाइनमेंट नहीं दिया आपको। असाइनमेंट आप पाइथन का कोई भी लिंक डालने वाला है, असाइनमेंट का जो भी वर्क आपको मिलता है उसको इमीडिएटली करना है और कंप्लीट करके सबमिट कर देना है, ठीक है। अभी आपका बड़ा आ रहा है एग्ज़ाम, डेट शीट आपको मिल गई है। सो उस एग्ज़ाम में आपको बहुत बढ़िया से परफॉर्म करना है। उसके लिए आपको हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है, हमें आपके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऑनलाइन मेथड से ही सब सीख लेंगे। और पहला जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है उसके अलावा मैंने आपको नंबर सिस्टम कराया है। तो जो नंबर सिस्टम मैंने कराया है बाइनरी नंबर सिस्टम, उसमें कन्वर्जन ये पूरा आने वाला है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और ये सब चीज़ मैंने आपको जो जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सब आने वाला है पाइथन को छोड़ के। अब आपके पास अगर प्रीवियस क्लासेस मिस हो गई हैं कोई दिक्कत नहीं है, सारे यूट्यूब पे हैं, आराम से सारी डे बाय डे आप क्लासेस नोट करते रहिए, पढ़ते जाइए। ज़्यादा मुश्किल है नहीं क्योंकि इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दैट यू ऑल वेरी वेल अंडरस्टूड एंड यू हैव लर्नड अर्लियर इन प्रीवियस क्लासेस।
So except few things, nothing is new. ठीक है, और फिर भी अगर आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो आप बता दीजिए मुझे, ठीक है ना। अब बात करते हैं, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर वो आप कोई पाइथन का लिंक डालने वाले थे, तो python.org इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोई भी इसको बिना किसी पैसा दिए डाउनलोड कर सकता है। अब देखिए, अगर आपके कंप्यूटर के हिसाब से आपको वो फाइल डाउनलोड होगी या रन होगी, जैसे आपने कोई भी पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है 3.8.5, वो आपने डाउनलोड कर लो, python.org पे जाओ और कहीं नहीं जाना है आपको। python.org इज ए ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो वो आपको ओपन कर लेना है और वो आपको दिखाना है। उसके अंदर जाके पाइथन फॉर विंडोज, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है वो आपको चेक करना है। अब मान लीजिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज और आप 32 बिट पे काम कर रहे हैं, आपका पुराना वर्जन है विंडोज का, तो हो सकता है कि जो नया वाला मॉड्यूल है 3.8.5 वो इंस्टॉल हो जाए लेकिन रन नहीं हो। रन कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, रन कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। अब मान लो वो रन नहीं होगा तो क्या करना है, उससे प्रीवियस वर्जन आपको लोड कर लेना है, ठीक है। मेरे पास पाइथन का 2.7 वर्जन है, जो हमारे यहाँ लैब में विंडोज 7 मॉडल है, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनमें सब में वो इंस्टॉल किया हुआ है, वहाँ चल रहा है। क्योंकि मेरे कंप्यूटर्स में 3.7 और 3.8 मॉड्यूल रन नहीं हुआ यहाँ पे लैब में, लेकिन घर पे विंडो 10 है, तो विंडो 10 अगर आपके पास है तो पाइथन के सारे मॉड्यूल रन हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर कोई लिंक आपको चाहते हैं तो मैं तो दोनों पाइथन के लिंक सॉफ्टवेयर मेरे पास हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप ट्राई कर लेना। और अगर आपको इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बताइए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, कितने बिट का है, ठीक है ना, और फिर मैं आपको वो बता दूंगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप कौन सा पाइथन आप इंस्टॉल करें। अभी फिलहाल आपको पाइथन इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ दिन जब तक हमारी क्लास चल रही है, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे हम, तब तक आपको पाइथन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आराम से आप 1-2 दिन क्लास लीजिए, फिर बीच बीच में हम पाइथन का मैं एक बार लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, पाइथन कैसे ओपन करना है, पाइथन में फाइल कैसे बनानी है, पाइथन के प्रोग्राम को रन कैसे करना है, मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा आपको, और उसके बाद फिर हम करेंगे। और तब तक अगर आपका पाइथन नहीं इंस्टॉल हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप पर्सनली मेरे को भेज दीजिए मैसेज, अपना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल बता दीजिए, विंडोज़ कौन सा है और कौन से बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी आप बता देना, ठीक है। ओके, सो अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ पाइथन के ऊपर। सो पाइथन जो है ये 1990 के आसपास डेवलप हुई थी और 1991 में ये मार्केट में परफेक्टली लॉन्च हो गई थी, तो इसकी लॉन्च डेट हम कहेंगे 1991 है। डेवलप्ड, ये चैप्टर 5 नहीं है, हम लोग अभी चैप्टर 6 करेंगे सबसे पहले। चैप्टर 4 चैप्टर 5 दोनों प्रोग्रामिंग से जुड़े हुए हैं, बोथ आर रिलेवेंट टू प्रोग्रामिंग, बट ऑल these content of 4 and 5 are the ifs and buts of programming. Some theoretical concepts, some theoretical aspects of programming that we will not think about it directly, we will take hands-on experience with Python, right? So just little introduction I am going to give you here, and after that we will start the practice of Python. Direct programming we will start, and meanwhile in middle terms or after ending of some chapters I will take you back and I will explain the previous things also. Don't worry.
whatever is in our syllabus, we will cover it. Okay. So officially it is launched in 1990. Actually it is developed in 1990s. Late 1990s, exact date is not registered. Developed by Guido van Rossum. Guido van Rossum. February month में February 1991 it is patented and launched. Actually it is a high level language with powerful object oriented concepts, object oriented programming system, OOPS, like C++. C++ is also OOPS language, Java, .NET, these all are OOPS based language. OOPS is the concept, object oriented language. The language, programming language which is based on objects. Basically their orientation is objects, not the problem. Alright, the design of program in such language is quite easier and comfortable to the programmer, as well as they are very realistic in nature. They are realistic based programming. Okay, we will not go in the detail and history of the Python, right? It is a powerful high level language that using concept of OOPS. ये एक इंट्रोडक्शन है. किसने डेवलप किया? ग्वाइडो वैन रॉसम 1991, फैब 1991 में इट हैज बीन डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड. ये लैंग्वेज जो है, इसका हिस्ट्री का एक पार्ट आप जान सकते हैं कि ये जो लैंग्वेज है, हमारी जो सी लैंग्वेज है उसको सी क्यों कहते हैं? सी लैंग्वेज नाम सुना होगा आपने, सी लैंग्वेज. सी से पहले एक बी लैंग्वेज थी, उसका पूरा नाम था BPCL, BCPL, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइक दैट ए नेम इज देयर, एंड इट वाज मॉडिफाइड एंड कन्वर्टेड इन ए न्यू फॉर्मेट. सो बी के बाद सी आता है, इसलिए उसका नाम सी रख दिया. ठीक है. और सी से फिर C++ और C# आगे और लैंग्वेजेस बनी. इसी के पैरेलल में एक लैंग्वेज बनी थी बेसिक लैंग्वेज, बिगिनर्स ऑल पर्पस इंस्ट्रक्शन कोडिंग, बिगिनर्स ऑल बेसिक, फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा अभी. बेसिक लैंग्वेज था जो कि पुरानी लैंग्वेज नहीं. आप लोगों ने शायद आई थिंक बेसिक लैंग्वेज सीखा भी होगा, क्यू बेसिक करके. क्यू बेसिक लैंग्वेज आपने सीखा होगा अर्ली मिडिल स्कूल के अंदर. सो इट इज बेसिस ऑन बेसिक लैंग्वेज प्लस. तो ये बेसिक और एक और लैंग्वेज था मॉड्यूला 3. इन दोनों लैंग्वेज को एक बेस प्लेटफॉर्म बना के इस लैंग्वेज को बनाया गया. सो it is composed on basis of two previously developed language, basic and modular 3. ये इन दोनों को मिला के बनाया गया था. अब इसको सीखने के लिए हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूं. देखिए, एक लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या अंतर होता है, और उससे पहले मैं बताता हूं. मैंने आपको बताया कि ये एक पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज है. तो लैंग्वेज दो तरह की होती हैं, एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज. बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनी थी. आउट ऑफ दैट द इनिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर कॉल्ड लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या लो लेवल. व्हाई? दे आर डिपेंड अपॉन machine to machine. The programs are designed differently. So same program you cannot run on some other machine. That's why they are known as low level language. Examples: machine language and assembly language, right? Machine language and assembly language. And after that
during that particular period 1960 around, we have done a lot of improvements in the technology and architecture of computer, and computers are manufactured in a large scale. So, and it was spreading like anything and using by normal people also. Normal people, I want to say that earlier it was used by some professionals, architecture, those who are having high skilled in architecture, computer architecture, they only can use that. And after that, it has been made it easy for everyone. How? Because of the architecture is simple and the programming is implemented, that is also simple. High level language provide a platform that can be same for all different machines. एक इंटेल ने मशीन बनाई, एक मोटरोला ने मशीन बनाई, एक आईबीएम ने मशीन बनाई. मैं मशीन ही कह रहा हूं अभी कंप्यूटर को. तो जो प्रोग्राम आपने यहां बनाया वही प्रोग्राम आप वहां भी और वहां भी रन कर सकते हो with the help of very small sort of changes. Same program you can use it. Why? Because this language is having a converter called either assembler, either interpreter or compiler. So just install the compiler and interpreter of the language in the machine and the machine is able to run your program. So programming content we need not to make any change. So that's why they are known as high level language. Language high hai because of the portability. They can run in any machine. Plus they are having various attractive features that need not, the user or programmer need not to have high skill of architectural knowledge. यानी जैसे अभी आपको मैं पाइथन सिखा रहा हूं, अगर पहले आप आए होते 1-2 साल पहले तो आपको मुझे मैं आपको C++ पढ़ाता. आपको C++ सीखने के लिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर की ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से सीख सकते हैं. वैसे पाइथन सीखने के लिए भी आपको ज़्यादा आर्किटेक्चर, और मैं तो आपको ज़्यादा नॉलेज क्या, कुछ भी नॉलेज नहीं दे रहा हूँ अभी, प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन सीधा मैं पाइथन शुरू कर रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप सीख जाओगे, बहुत आसान है. ऑल राइट, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड वेरी इजी टू यूज़. जस्ट एक काम करना है, जैसे आप लोग स्कूल में आए, आपने इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करना सीखा, तो धीरे धीरे आप सीखे, स्टेप बाय स्टेप आप उसके रूल्स को, ग्रामर रूल्स को अंडरस्टैंड किया, एंड आफ्टर लर्निंग ऑल द ग्रामर रूल्स you would be able to speak in English, you would be able to read the content in English and understand it, and you would be able to write in English, right? So ये सारी चीजें आप करने लगे. वैसे ही हमें यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ ग्रामर रूल्स जो हैं उनको हमें सीखना है और उनको सीखते हुए आगे बढ़ना है, right? If we know how to write this, how to write this, how to write this, yes, after that we can write in Python, we can understand the written program of Python. वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है. कैसे? जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, Ram is playing guitar. You all understand it because you know the meaning and the English language rules. If you don't know English language rule, then if I said guitar is playing Ram, so both things are same for you if you don't know the grammar rules of Ram, right? Same way, अगर आपको इंग्लिश पता है तो मैं लिखता हूं राम इज प्लेइंग गिटार, मैं लिख रहा हूं तो आप समझ रहे हैं कि मैं सही बोल रहा हूं, ठीक है? हर पार्ट का, मैं धीरे धीरे इसलिए बोला, हर पार्ट का अलग अलग इंडिविजुअल मीनिंग है, एक कनेक्टनेस है, एक ऑर्डर है. अगर मैं उस ऑर्डर को चेंज कर देता हूं, राम, गिटार, प्लेइंग, इज, वर्ड्स आर सेम, ऑर्डर चेंज्ड, मीनिंग चेंज्ड. सो यू अंडरस्टैंड बिकॉज यू नो. सेम वे आपको यहां पर भी अपने आप को कंप्यूटर बनाना है.
क्योंकि अगर आपने चेंजेस में किया कुछ तो इसके अंदर इसमें कन्वर्टर है। पाइथन इज ए इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। सो पाइथन में कंपाइलर नहीं होता, पाइथन में इंटरप्रेटर होता है। सो इसका इंटरप्रेटर क्या करेगा? इट विल रीड द कंटेंट व्हाट यू टाइप्ड इन पाइथन। अब वहां आपने मिस्टेक कर दिया तो ये क्या करेगा? उसको एरर बताएगा। वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो मशीन है, वो अपने आप उसको ठीक नहीं करेगा। हाँ, सजेशन दे देगा कि यहां पर ऐसा ऐसा होना चाहिए था। समझ रहे बात को? तो आपने गलती नहीं करना है। गलती कर भी दी शुरू शुरू में तो आपको इंटरप्रेटर हेल्प कर देगा कि यहाँ पे ये गलती है, आपसे कुछ गलती हुआ है इस लाइन में, उसको आप थोड़ा ध्यान से देख लो। तो लिखते समय थोड़ा ध्यान रखना है अपने को। ऐसे ही हम नॉर्मली जैसे रफ नोटबुक में या आपकी क्लास वर्क नोटबुक में भी आप कहीं कुछ भी लिख देते हैं। सबकी लेवल ऑफ राइटिंग सबकी अलग अलग होती है। जो चीज मैं बोल रहा हूं, मैं समझा रहा हूं आपको, इन एवरी क्लास all of you are writing your class notes, isn't it? But if I compare, or if you guys will compare all other notebooks together, you will get different definition, different number of pages. One student has written 5 pages on the same topic, same class. Another student has written only half page. Another student has written only 2.5 pages. Some are having some definitions which are not written by any other students. Maybe. So your level of writing is different. But here you have to follow the same protocols. Programming logic may be differ. यानी एक ही प्रोग्राम को सॉल्व करने के 2 या 3 तरीके हो सकते हैं, बट जो लेवल है राइटिंग का वो सेम होना चाहिए। सेम कंटेंट आपको, एटलीस्ट उतने कंटेंट तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रोग्राम लिखते समय आपको पता होना चाहिए कि क्या नहीं लिखना है और क्या लिखना है। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इवन आई कैन से, मैंने 16 साल C++ लैंग्वेज पढ़ाया है। मैं ये कह रहा हूं कि पाइथन इज वेरी मच इजी लैंग्वेज फॉर बिगिनर्स। बहुत सारी लिमिटेशंस जो C++ में थी, दे आर नॉट इन पाइथन। They are giving freedom to the students that let you begin. At least you could have the knowledge of programming. You could experience the programming. अब थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ठीक है? मैं पूछता हूं गौरव शर्मा से, बेटा बताइए व्हाट इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम? After that, Rajesh Kumar and Abid Khan, they can answer the same question. Question is, what is a computer program? You must understand that this is a program. Little wait, we will do, no problem. Gaurav Sharma, program is a step-by-step produce of doing some work. I'm not satisfied. Rajesh Kumar, Abid Khan, Sonakshi. Yes, Abid replied, computer program is a collection of instructions. Rajesh replied, a computer program is a collection of instructions that can be executed by a computer to perform a specific task. Impressive. Rajesh, very impressive. Very impressive. So you guys can note down the definition of a computer program. And still I am waiting for one answer from another. Last I have assigned this question to
चलिए आप डेफिनेशन लिखिए। ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस written in a programming language which is designed in such a way to solve a particular problem, which is designed in such a way to solve a particular problem or to do a particular operation in computer system, या through computer system भी हम कह सकते हैं। Netra also written very correctly a step by step set of instruction given to computer to some meaningful information or for a specific type। बहुत अच्छा लिखा है, बट थोड़ा सा इसमें यह है कि बस हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना है। इंस्ट्रक्शन किस में लिखना है? इंग्लिश में नहीं लिखना है, जर्मन में नहीं लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है। इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिटन इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिजाइन उसका ऐसे आपको उस इंस्ट्रक्शंस को डिजाइन करना है स्टेप बाय स्टेप। डिजाइन मीन्स स्टेप बाय स्टेप आपको वो इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखनी है कि वो कंप्यूटर पे जब वो एग्जीक्यूट करे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर उसको पढ़ के उसको एग्जीक्यूट करके एक पर्टिकुलर टाइप टास्क मतलब कोई काम या कोई ऑपरेशन वो करे। ठीक है। सोनाक्षी, a computer program is usually written by a programmer in a programming language। Not a completed definition, I have given the complete definition। So कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए? प्रोग्राम पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों का एडमिशन लिया हमने, आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ डाला था, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उस डेट ऑफ बर्थ को डालते हैं कंप्यूटर में। एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में डालेंगे, जैसे ही वो रन होगा वो आपकी आंसर में हमको बताएगा कि ये जो बच्चा है उस इतने साल, इतने महीने और इतने दिन का है 31 मार्च 2020 तक। उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं आर यू एलिजिबल फॉर एडमिशन और नॉट। अब देखिए कंप्यूटर में, विंडोज में ये सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं होगा, ठीक है ना, ये प्रोग्राम आपके पास नहीं है, हमें चाहिए था, हमने बनाया या हमने रखा उसको। तो जैसे वो प्रोग्राम में हम डेटा डालते हैं, क्या डालते हैं? आपकी डेट ऑफ बर्थ। जैसे हम डालते हैं वो हमको आंसर में क्या देता है? आपका नंबर ऑफ ईयर, डेट और ये टाइम, ठीक है। डेट, ईयर्स, मंथ और डेज कितना हुआ आपका आज की डेट तक, तो उससे हमें पता, हमारा काम हो जाता है। सो फॉर ए पर्टिकुलर टास्क, जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कुछ कंप्यूटर में, तो उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया, कैलकुलेटर प्रोग्राम, वो कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। आपको गेम खेलना है कोई, तो वो गेम सॉफ्टवेयर जो है वो जब हम कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देंगे तो कंप्यूटर उसको रन करेगा और वो जो काम करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो काम करेगा, लेकिन उसके पीछे की अंडर सारी प्रोग्रामिंग है, तभी वो ऐसा काम कर रहा है। अब वो सॉफ्टवेयर या वो गेम कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर वो काम नहीं कर सकता। ठीक बात है ना। अब देखिए कि हमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। आपको कम से कम, अभी आप स्टार्ट अगर आप कर रहे हैं, इफ इट इज योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न, देन यू आर लकी। नाउ यू कैन, आफ्टर लर्निंग पाइथन, you have to learn C and C++ at least when you go to the engineering college, plus you have to learn so many other platforms, you have to work on various languages. So if you start with this, then it is very good because it is easy to use, it is easy to work। ठीक है, तो अब हम
कोई भी चीज थ्योरेटिकल नहीं करेंगे। अगली क्लास सीधा प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस से होगी, यानी हम पहले क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस अभी नहीं बनाएंगे, मैं आपको प्रोग्राम नहीं बताऊंगा, मैं आपको फंडामेंटल ऑफ प्रोग्राम्स बताऊंगा। यानी जैसे आप इंग्लिश सीखते हो तो सबसे पहले क्या सीखा आपने इंग्लिश में? व्हाट यू हैव लर्नड फर्स्ट व्हेन यू स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, टेल मी। Alphabets. So in my next class we will learn Python alphabets. Okay बच्चों, so we will meet soon and we will learn. Thank you.